CSE 1 students, please tell me, is CPU scheduling complete in your class? All the CPU scheduling algorithms, round robin, first come first serve, priority scheduling, preemption, non-preemptive scheduling, and CSE 2. Yes, please tell me, students. In CSE 1, CPU scheduling is over all these algorithms. Let me show you. Hello ma'am, in CSE 1 we have done till priority with preemption. Okay, let me open the chapter. So these are all those algorithms. So you are saying that in CSE 1 we have done till priority scheduling, right? Yes. And in CSE 2 I think round robin तक complete हो चुका है. Yes or no? Yes or no in CSE 2 students? Yes ma'am, हो गया. And multi-level queue scheduling and multi-level feedback queue scheduling you have to study it by yourself, okay? It is given in this PPT also, you can study it by yourself. So in CSE 1, one more round robin is remaining, so we will complete it when we will have individual lecture. For today I will be completing this chapter in your syllabus, this input output management, 6 chapters. So we have completed deadlocks. Okay, we completed process management आपका complete हो चुका है. Yes, process management मैंने ही पढ़ा है, completed. Deadlock completed. Ma'am, deadlock is remaining. Deadlock is remaining in which class? पूरा complete नहीं हुआ है, CSE 1. Okay, in CSE 1. Just a minute. Huh? Let me show you the deadlocks also. आपका डेडलॉक्स में कहाँ तक है? लेट मी शो यू द डिटेल टॉपिक्स. ओके, बैंकर्स एल्गोरिथम तक हो चुका है. सो डेडलॉक में ही सीपीयू शेड्यूलिंग है, राइट? डेडलॉक प्रिवेंशन तक आई थिंक दोनों ही क्लासेस में हो चुका है, राइट? यस. ओके, सीएसई 1 में भी प्रिवेंशन तक हो चुका है अकॉर्डिंग टू मी. नाउ सीपीयू शेड्यूलिंग जो है, दिस 4.5, ओके, CPU scheduling. In CPU scheduling in CSE 1 up to priority scheduling तक हुआ है. In CSE 2 round robin तक हुआ है. Last two topics, like I said, you have to study it by yourself because वो उसका practical नहीं आएगा, theory आएगा. Then address space and address translation, that I will be covering today. Covering means I will tell you what is it, because these are two terms that you should know, that I will be covering with this chapter, input output management. Clear? Clear?
Yes or no? Yes. Please say yes Yes, or no. ma'am. Okay. So now, input output management. Now what is address space? Okay. So address space is a set of logical addresses that a process reference in its code. Okay. So whenever we say address space, so we are referring it to the logical address and not the physical address. So what is the difference? The physical address is the address the loader generates these addresses at the time when the program is loaded into the main memory. So when the address in the main memory is allocated, actually that is the physical address. But what the coder is using in the program, that is a logical address. Okay. So we can divide or classify these address spaces into three types: symbolic address, relative address, and physical address. Okay. So this, what is symbolic address? The address used in the source code. The variable names, constants, and the instructions are the basic elements of symbolic address space. So whatever term we are using for in our code for whenever we are giving any name of the variable, ठीक है, या कांस्टेंट या कुछ भी आप कोड में लिखते हो, तो दैट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस इन मेमोरी. ठीक है, फिजिकल स्पेस. Logically we assign them logically for our understanding. We assume that this variable is taking this much space in memory. Okay, where we don't know in memory, so that is a kind of symbolic address. Relative address is what at the time of compilation a compiler converts the symbolic address into relative address. यानी कि तीन चीजें हुई. So when we write a code, ठीक है, एट दैट टाइम जो हम एड्रेस पे अज्यूम करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक एड्रेस, और हम उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन दैट इज कन्वर्टेड इनटू रिलेटिव एड्रेस. ठीक है, यानी कि लॉजिकल एड्रेस विल बी नाउ कन्वर्टिंग इनटू रिलेटिव एड्रेस, यानी कि दैट विल बी नाउ असाइन द फिजिकल एड्रेस इन द मेमोरी. ठीक है, इट इज नॉट येट असाइन, असाइन नहीं हुआ है. ठीक है, असाइन नहीं हुआ है बट रेडी टू बी असाइन वी कैन से. एंड व्हेन इट इज असाइन्ड द फिजिकल स्पेस इन मेमोरी वी कॉल इट एज अ फिजिकल स्पेस एड्रेस. सॉरी. तो तीन तरह से वी कैन क्लासिफाई इट. ड्यूरिंग कोड, जब हम कोड लिखते हैं तब. ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ठीक है, एंड व्हेन द एक्चुअली इट इज असाइन्ड द memory in physical space. Okay, so whenever programmer writes a code, we say that symbolic address is assigned to the variable. During compilation we say that relative address is symbolic address is converted into what? Relative address. ठीक है, and for our understanding, and then at the end physical address is given in the main memory. Okay. Now what is virtual and physical addresses are same in compile time and load time address binding scheme. So virtual, I think आप लोगों ने memory management में पढ़ा है ये. Virtual address और physical address space memory management में have you gone through it in that chapter? Virtual and physical address. Yes, Amit, please tell me. No, ma'am. नो, बिकॉज मुझे लगा मेमोरी मैनेजमेंट है तो एटलीस्ट आया होगा इसके बारे में. मैम एड्रेस वाला पोर्शन छोड़ दिया था क्योंकि वो आगे के चैप्टर में कवर. ओके, द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम इज रेफर्ड टू एज लॉजिकल एड्रेस स्पेस. ठीक है, एंड सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज लॉजिकल एड्रेसेस आर फिजिकल एड्रेस स्पेस. तो आपको पता ही है कि भाई व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस, जो प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. एंड व्हेन दैट वेरिएबल इज एक्चुअली असाइन्ड द स्पेस इन मेमोरी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग उस वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिजिकल एड्रेस असाइन होगा मेन मेमोरी में, दैट इज व्हाट फिजिकल एड्रेस. ओके, तो रन टाइम मैपिंग जो होती है फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल is done by memory management unit, that is MMU. Okay, so MMU uses the following mechanism to convert the virtual address into physical address.
So a value in the base register is added to every address generated by the user process, which is treated as offset at the time it is sent to the memory. For example, if the base register value is 10,000, then an attempt by the user to use the address location of 100 will be dynamically relocated to location 10,000 and 100. यानी कि suppose if the value in the register is 10,000, then if suppose some user is assigning address space to some variable, ठीक है, so next address space will be what 10,000 and 100, ठीक है. So user program deals with the virtual addresses. It never sees the real physical addresses. So real physical address 10,000 100 इस फॉर्म में नहीं होते हैं, you know, they are in different format. Okay. But if I am saying that I have declared a variable, ठीक है, which is holding the value 10, and for my understanding, I am saying that it is holding the memory location 1000 or 10,000, ठीक है. So this is for my understanding, but actually it will be something different in the memory location. So आपको C++ में आयो पढ़ाया होगा how to know the memory location of any variable, how to find the memory location of any variable. I don't know उसका function क्या है, but when you use that function, you will get the actual physical location of that variable. ठीक है. So do any one of you know what is the function? What is that function? Yes. To know the memory location of any variable. Do you remember any one of you? Yes. So please find out and tell me, okay? And now, static versus dynamic loading. So what is static versus dynamic loading? Okay. So the choice between static or dynamic loading is made at the time of computer program being developed. If you have to load your program statically at the means then at the time of compilation, the complete program will be compiled and linked without leaving any external program or module dependency. So a whole program will be compiled at the time of compilation, and the linker combines the object program with the necessary object modules, okay, in the absolute program, which also includes logical addresses. But when we are writing a program dynamically, or when you are writing a dynamically loaded program, then your compiler will compile the program, and for all the modules which you want to include dynamically, only references will be provided and rest of the work will be done at the time of execution. So what is the difference between static versus dynamic loading? So in static, everything is done during compilation, while in dynamic loading, initially at the time of compilation, only references are provided and everything else is done during the time of execution. Okay. So these are few terms like मैं जो बोल रही हूँ यहाँ symbolic address, relative address, physical address, static versus dynamic loading, ठीक है, and swapping. Swapping you all know. I hope अभी तक clear हो गया what is swapping. So whenever we are swapping, suppose we are swapping from one process to another, ठीक है. So P1 के जो भी process status है, P1 का जो भी status है या variable values and everything, that will be saved, okay, and P2 का जो भी status है registers हैं, that will be loaded into the main memory. So swapping is the mechanism in which process can be swapped temporarily out of main memory. So this will be out of main memory and this will be inside main memory. Okay, out of main memory to secondary storage disk. So P1 will be out of main memory and it will temporarily will be there in the secondary storage, okay, and make that memory available to other processes. So other process now main memory will be available to process P2.
there in the main memory. So that is nothing but swapping. Okay. So ये दिया हुआ है. This is main memory. This is secondary memory. Process P1, P2, P1 goes for some input output operation. Swap out perform हुआ है यहाँ पे. ठीक है. तो P1 is swapped out and P3 process जो कि अभी secondary memory में था, it is what swapped in for some time. After some time again P1 comes back and P3 swap out and P1 comes back. So this is the swapping of processes between main memory and secondary memory. Okay. So let us assume that user process is of 2048 KB and on a standard hard disk where swapping will take place has a data transfer rate of 1 MB per second. The actual transfer of 1000K process to or from main memory will take how many milliseconds? So if their question comes like this, what you have to do, the size of the process divided by how much time it is taking, यानी कि उसका जो data transfer rate है वो. ठीक है. So 1 MB per second यानी कि 1024 KB per second, which is equals to 2 seconds, which is equals to 2000 milliseconds. Okay. The actual transfer of 1000K process. तो 1000K के लिए कितना होगा? ठीक है. So that is 2048 KB divided by 1024 KB per second. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. Okay. Now what are block input output devices की बात हो रही है. ठीक है. So what are block devices, what are character devices, what are device controllers. ठीक है. So we all know what are device controllers, device drivers क्या होते हैं. ठीक है. So I don't need to explain it in detail. Block device is the one with the driver communicates by sending entire block of data. For example, hard disk, USB, cameras. And character devices are like parallel port, sound card, serial ports. ठीक है. So device controllers also you know. So this is the diagram जिसमें बताया गया है what kind of devices we have. Okay. Now then we have synchronous versus asynchronous input output devices. So we are classifying between synchronous and asynchronous. So classification कैसे हो रहा है? In the scheme, in synchronous scheme, the CPU execution waits while input output proceeds. So input output operation is going on and CPU operation is waiting. And in asynchronous, input output is concurrently happening with CPU execution. ठीक है. So this is the difference. Now आप लोगों ने computer organization या ऐसे subject में पढ़ा होगा what is input output instruction, memory mapped input output and DMA, direct memory access. ठीक है. So the CPU must have a way to pass information and to and from input output devices. तो ये क्या बोल रहा है कि CPU को अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन पास करनी हो या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से CPU पे इंफॉर्मेशन पास करनी हो, so there are 3 approaches in which CPU can communicate with device: spatial instruction IO, memory mapped IO and DMA. So in spatial instruction IO, this uses CPU instructions that are specifically made for controlling input output devices. So special instructions are there. These instructions allow data to be sent to input output device or read from an input output device. Okay. Then memory map. So when using memory mapped input output, the same address space is shared by memory and input output devices. So memory and devices are sharing the same address space. The device is connected directly to the main memory location so that input output device can transfer block of data to and from memory without going through CPU. ठीक है. So without the involvement of CPU, communication is happening in this case of memory mapped input output. There the input output is given the same address space or is sharing the same address space is shared by memory and input output devices both. Now DMA. ठीक है. यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो. So CPU input output device. So this
दिस इज व्हाट इनपुट आउटपुट कमांड्स, ठीक है, यानी कि जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन। एंड दिस इज थ्रू मेमोरी वेयर सीपीयू एज वेल एज input output device is holding the same address space, ठीक है। So suppose CPU wants to communicate something, so it will put the data here, it will put the data in this memory, ठीक है, data यहाँ पे रखा, and this input output device will read that data from this memory. ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है डेटा को, ठीक है, no transferring will be there in case of memory sharing, okay। So पहले वाले केस में क्या था, instructions are transferred, ठीक है, कि भाई सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को, या इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू को ट्रांसफर करेगा। बट इन केस ऑफ मेमोरी मैप क्या होगा, whatever CPU or input output device wants to communicate, they will keep the data here in the memory and the other will read it from the memory. Simple, okay. Third way is DMA, that is direct memory access. So what is DMA, direct memory access? So slow devices like keyboards will generate an interrupt to the main CPU after each byte is transferred. A fast device such as disk generated an interrupt for each byte. Operating system would spend most of the time in handling these interrupts. Okay. So typical computer uses DMA, that is direct memory access hardware, to reduce the overhead or to handle the interrupts. So what is DMA? DMA means CPU grants input-output module authority to read from and write to memory without involvement. Okay, DMA module itself controls the exchange of data between main memory and input-output devices. So how the main memory and I/O device are communicating? Sorry, CPU and I/O device are communicating. So in DMA, that is direct memory access, this module, DMA module itself controls the exchange of data between memory and input output device. CPU is only involved at the beginning and end of transfer and interrupted only after entire block has been transferred. यानी कि direct memory access नाम ही इसलिए दिया गया है because there is no involvement of CPU, only at the beginning and ending of transfer there will be an involvement of CPU. Otherwise there will be direct exchange of data or between the memory and input output device, and that is handled by DMA module. Okay, so CPU का involvement जो है वो हमें जितना हो सके least करना है. Why? Because otherwise CPU will be involved in handling all the interrupts all the time. Okay, तो हमें CPU का involvement for interrupt handling कम से कम करना है, ठीक है? Direct memory address needs special hardware called as DMA controller, that is DMAC. So here you can see this is DMA, ठीक है? Which is handling the communication between main memory and all the devices, and the involvement of CPU will be only there when it is needed. Okay, so all these things are going with the help of data bus. Okay, communication is going through data bus. So operating system uses DMA hardware as follows. The device driver is instructed to transfer the disk data to buffer address. Device transfer driver then instruct the data controller to data transfer to buffer. Disk controller starts DMA transfer. Disk controller sends each byte to DMA. तो ये आपको क्या है, theoretical है, पूरा 4 steps याद रख लेना है. How DMA hardware works. Okay, 6 steps. Sorry. So I am not going into detail. You have to remember all these 6 steps. Now polling versus interrupt output. So ये है नहीं कोर्स में, मैंने ऐड किया हुआ है. You can read it. What is polling? What is interrupts? Input output. Okay. Now main जो है हमारा input output management में, so that is started from, ये सब आप read कर लेना. All is theory. Which is actually not there, but you must know, that's why I have kept it in this PDF. Okay. Now, yes,
Now disk. So you all know the disk structure. What is track, sector, cylinder, splatter, arm क्या होता है, read write head क्या होता है, ठीक है? We all know the structure of magnetic disk. Structure कभी पूछा नहीं जाएगा. But why we are studying this? Because now we are going to study disk scheduling. Like we studied CPU scheduling algorithms, first come first serve, round robin, shortest job first, okay, shortest remaining time first. In the same way we have, like we had CPU scheduling, we have disk scheduling. What is disk scheduling? Disk scheduling is done by operating systems to schedule input-output requests arriving for the disk. So कोई भी input-output request disk पे arrive होती है, then disk scheduling कैसे उसको manage करेगा, ठीक है, कैसे handle करेगा, so that is also called as input-output scheduling. और input-output request को कैसे schedule करना है, वो सब that comes under this scheduling algorithms. There are different algorithms for that purpose. Okay, so there are many this scheduling algorithms, but before discussing them, so let's have a look on all these four terms. What is seek time? So whenever, like हमने CPU scheduling में देखा था, you have to calculate waiting time and turnaround time. So in the same way, there are four terms here. You will be asked to calculate the seek time or rotational latency or transfer time. So those who are preparing for GATE, they must know this topic. क्योंकि GATE में इसके questions भी आते हैं. Who is preparing for GATE? आपने पढ़ा है? आ गया है आप लोगों को? Those who are preparing this scheduling algorithms. Is anyone preparing for GATE? Yes. I think 2-3 students were preparing for GATE. So this scheduling algorithms is a very important topic from that perspective. So seek time is the time taken to locate the disk arm. Okay, what is disk arm? So here, okay, to locate this disk arm, okay, at right position. So to a specified track where the data is to be read or write. So the disk scheduling algorithm that gives minimum average seek time is better. So like हम CPU scheduling में कहते थे कि the algorithm which gives minimum waiting time is better. In the same way here we say that the algorithm which gives minimum seek time is better. And in the same way, rotational latency is the time taken by the desired sector of the disk to rotate into the position so that it can access the read-write heads is the rotational latency. And it should always be minimum. The minimum, the better. Okay. Now transfer time, that should also be minimum. It depends on rotating speed of the disk. So transfer time किस पे depend होता है? Rotating speed पे. ठीक है, and the number of bytes to be transferred. Then disk access time. So disk access time is what? Seek time plus rotational latency plus transfer time. So this is disk access time. What? Seek time plus rotational latency plus transfer time. And the whole is disk response time में क्या होगा? Disk queuing delay. If there is some delay or waiting time, then that will be added in disk response time. Okay. Now, the first algorithm is FCFS. So this is the simplest algorithm. नाम से पता है जो पहले request आएगी उसको पहले serve करना है, ठीक है? So suppose the order of request is like this. Numbers दिए हुए हैं. So suppose this is request 1, this is 2, this is 3. So जिस तरह से order है उसी तरह से request आ रही है. And it is saying that the current position of read-write head is 50. इस लोकेशन पे अभी हमारा आर्म है, ठीक है, read-write head है. So how we will go? So at 50 here is our read-write head. Now you see, first come first serve. That is first 82. So 82 is coming. So our read-write head will go to serve this request 82.
then what, 170 is there, so it will go to 170. So here you can see 170, from 82 to 170 it is going. Then 43, so from 170 it will directly go to 43. Here you can see 43. तो ये हो क्या रहा है, our read write head is moving. Okay, read write head is moving to serve the request. So first come first serve. So at this location it will go, then at this location it will go, then at this location it will go. Okay, like this, 140, 24, 16, 190. So then 140, then 24, then 16 and then 190. ठीक है, इस तरह से हमारा रीड राइट हेड मूव करेगा. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल सीक टाइम. ठीक है, टोटल सीक टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वी विल कैलकुलेट इट नाउ. 82 माइनस, स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 50 से. तो हमें 50 से 82 पे जाना पड़ा बिकॉज 82 इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, सो दिस वी विल 82 माइनस 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टाइम को. 82 माइनस 50, ठीक है, प्लस 170 माइनस 82. सो 170 माइनस 82 मतलब यहाँ जो टाइम लगा है 170 से लेके 82. ठीक है, ये जो टाइम है दिस. ठीक है, दिस टाइम विल बी एडेड टू द प्रीवियस टाइम. Then 170 minus 43. So this time will be added. Okay. Then 140 minus 43. So 140 minus 43. आपको क्या करना है? हमें टाइम जो है वो ऐड करना है. ठीक है, कौन सा टाइम ऐड करना है? जो टाइम लिया है रीड राइट हेड ने मूव करना है. तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो सपोज रीड राइट हेड है वो 170 पे था और 170 से वो गया है 43 पे. तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस टाइम? ऑब्वियसली 170 माइनस 43. ठीक है, देन 140 माइनस 43, देन 140 एंड देन 43. ठीक है, उसके बाद 140 एंड देन यहाँ पे क्या है 24, देन 24 माइनस 16 यानी कि दिस मच टाइम, and then 16 minus 190 or we can say 190 minus 16. So जो total seek time आया that is 642. ठीक है, so first come first serve में always there will be a problem like हमने CPU scheduling में देखा था कि waiting time जो है वो बढ़ जाता है या in the same way average seek time यहाँ पे बढ़ जाता है. क्यों भाई? क्योंकि request किस तरह से सर्व हो रही है? 82 देन सीधे किस पे गया? 140 170. 170 से सीधा उसको जाना पड़ा इन द अपोजिट डायरेक्शन 43 को सर्व करने. इन द लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग में हमने देखा था कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट वाज मच बेटर, यानी कि जिसका टाइम सीपीयू बर्स्ट टाइम छोटा था, ठीक है, वो पहले सर्व हो जाए तो बेटर रहता है. ठीक है, तो वेटिंग टाइम जो है वो हमारा वेटिंग टाइम जो है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में कम होता था. ठीक है, इन द सेम वे हियर कम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. वहां पे क्या था? शॉर्टेस्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम. यहाँ पे हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट सीक टाइम जिसका कम है उसकी रिक्वेस्ट को हम पहले सर्व करेंगे. राइट, सो नाउ द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इज सेम. ठीक है, बट and read write head is starting from 50, but जिसका 50 से सबसे नजदीक होगा जो, वो पहले रिक्वेस्ट सर्व की जाएगी. सो 50 से सबसे नजदीक में आता है 43, यानी कि 50 से 43 पे जाने के लिए सबसे कम टाइम लगेगा रीड राइट हेड को. सो हम 50 से 43 का डिस्टेंस पहले सर्व करेंगे. नाउ देखो 43 के नजदीक में क्या है?
So 43 के सबसे नजदीक में है 24. So we will go move towards 10, 24. Then 24 के नजदीक में क्या है 16. So we will move towards 16. अब 16 से सबसे नजदीक में क्या है जो बचे हैं 82, 170, 114, 190. So obviously 82 है, we will move towards 82. And then from 82 to 140, 142, 170 and then 190. So यहाँ पे when you will calculate the total seek time, it will be 208, which is much less than 642. ठीक है? Why? Because हमने इस केस में जिसका shortest seek time था वो पहले लिया. So read write head को बार zigzag move नहीं करना पड़ा है. Are you all getting? Yes or no? Please tell me. This is very important topic. इसका ये CPU scheduling, disk scheduling ये सब algorithm रहेंगे. Just a minute. Okay. Yes. CSE 1 में किसका है next lecture? And 2 में किसका है? Computer networks. Who takes? Amit Nayak sir. Oh, okay. Okay. I thought कि एक लेक्चर में हो जाएगा बट नहीं हुआ. No problem. We will now study this scan. आपको दिखाई दे रहा है document? Can you see this? Shared है? Yes. Okay, so scan. Now what is scan? Now scan algorithm, in scan algorithm, the disk arm moves into particular direction and services the request coming in the path, and after reaching at the end of the disk, it reverses the direction and again serves the request arriving in its path. It is also called as elevator algorithm. Elevator क्यों? How elevator यानी कि lift कैसे work करती है? तो सपोज लिफ्ट क्या होता है, हमेशा पहले एक डायरेक्शन में मूव करेगी एंड देन वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी. ठीक है? तो इन द सेम वे लाइक ये है, द ऑर्डर इज सेम. ठीक है, हमारा ऑर्डर सेम है. रीड राइट आर्म भी हमारा 50 पे है, बट इट विल मूव टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू. It is also given that disk arm should move towards the larger value. ठीक है, इट मीन्स दैट 50 से उसने मूव किया 82 की तरफ, यानी कि उसने पहले ये डायरेक्शन ली, तो इस डायरेक्शन की सारी रिक्वेस्ट को सर्व करेगा. 82, 142, देन 170 पे जाएगा, देन 190 पे जाएगा. नाउ 199 इज नॉट देयर इन अवर रिक्वेस्ट, बट क्या बोला है, इट विल रीच टू द एंड ऑफ द डिस्क. तो 199 यानी कि एंड ऑफ द डिस्क तक जाएगा एंड देन रिवर्स करेगा डायरेक्शन एंड देन 43, 24 एंड देन 16. सो व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग द सीक टाइम, हमें जो ये जो टाइम है 190 से 199 वाला, इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, 199 सॉरी इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी काउंट करना पड़ेगा. तो 199, तो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में कितना टाइम लगा है? ठीक है, सो 199 माइनस 50 डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 199 माइनस 190 माइनस 170 माइनस 142 माइनस 80 माइनस 50, वो सेम ही आएगा. ठीक है, सो 199 माइनस 50 प्लस 199 माइनस 16. ठीक है, सो दैट इज 332. तो इस वाली एल्गोरिथम में क्या होता है, एक डायरेक्शन में मूव करेगा एंड तक एंड देन इट विल गो टू रिवर्स डायरेक्शन. बट देयर इज अनदर एल्गोरिथम सी स्कैन, दैट इज सर्कुलर स्कैन. ठीक है, सर्कुलर स्कैन में क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, 199 तक जाएगा भी, बट इट विल रिवर्स लेके 0 तक जाएगा. ठीक है, रिवर्स लेके 0 तक जाएगा एंड अगेन इट विल स्टार्ट. सो अगेन जो रह गए हैं, ठीक है, 16, 24, 43, अगेन इट विल स्टार्ट एंड एंड हियर.
ठीक है। सो ये सर्कुलर स्कैन, नाम क्यों है सर्कुलर स्कैन? बिकॉज ये क्या कर रहा है, पूरा एंड तक जाके अगेन दूसरे एंड तक जाके रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है, ठीक है। तो हम इस दैट्स व्हाई अब इसका क्या होगा, बिकॉज इन दिस पूरा इतना जो है वो वेस्टेज हो रहा है टाइम, तो ऑब्वियसली सीक टाइम बढ़ ही जाएगा 391 एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। प्रीवियस वन क्या क्या था 332 और यहाँ क्या है 391, कौन सा टाइम बढ़ गया, दिस टाइम 199 माइनस 0, सो दिस 199 माइनस 0 जो इतना उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया ये टाइम बढ़ गया, ठीक है। So, but this is how this algorithm works. Okay, now look. So it is similar to scan disk algorithm except for the difference. What difference? Let us see. So given that moves towards larger value, look में क्या होता है, request end तक नहीं जाएगी, ठीक है। It will go up to last request only. Like 50 से start हुआ, it will move in one direction, but 190 तक जाएगा and then it will move in other direction and then 16 तक जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सीक टाइम जो है वो कम हो जाएगा। सर्कुलर लुक में अगेन नाम से पता चल रहा है आपको, भाई वो जाएगा 190 तक ही, बट देन पूरा रिवर्स लेके 16 पे जाएगा। ऐसा नहीं कि वो रिक्वेस्ट सर्व करते हुए जाए, लाइक 43 पे गया, देन 24 पे, देन 16 पे, नो, इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम, मिनिमम से शुरू करेगा 16, 24 एंड देन 43। तो अगेन ये हुआ तो सर्कुलर स्कैन ही, इसका सीक टाइम ज्यादा ही आएगा एज कंपेयर टू सर्कुलर लुक का सीक टाइम विल बी मोर देन लुक, ओके, बट this look is better than what? Look algorithms are better than scan algorithms, ठीक है। Why? Because scan algorithms end तक जाते हैं, ठीक है, 0 and 199 तक। So these are the disk scheduling algorithms and this is how you can be asked to calculate the seek time. So now there is a question given here. Consider an imaginary disk with 51 cylinders. A request comes to read a block on cylinder number 11. Then 11 से 136 इस तरह से ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। You have to calculate for FCFS, SSTF, scan, circular scan, look and C-look. तो ये सारी एल्गोरिथम्स के लिए करना है आप लोग। ये क्वेश्चन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, यू कैन कंसिडर इट एज योर होमवर्क, ओके। Now only topic which is remaining in this chapter is RAID, redundant array of independent disk. So for this topic actually it will take only 10 minutes or so. So okay, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, we will cover in next lecture because time हो चुका है। So according to the syllabus, okay, memory management में sorry input output management में we have these theory portions: input output devices, device controller, direct memory access, input output software, interrupt handler, device driver क्या होता है, ठीक है। तो ये सब जो theory थी that I have given in the PDF, you can go through those theory portion. Then comes disk scheduling, okay, ये हमने अभी पढ़ा। RAID levels जो है we will cover in the next lecture, and then error handling, वो भी छोटा सा topic है, that is not much. So RAID and error handling that we will see in next lecture, okay, done. Okay, I am downloading the attendance sheet, you can leave now. हाँ बोलो। मैम मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं सैटरडे को जाऊंगा, ऐसा है। अच्छा, क्योंकि संडे को मुझे बाहर जाना है और फ्राइडे को घर पे जाना पड़ेगा, ऐसा है। क्यों बाहर कहाँ जाना? वही लड़के थे तो देखनी तो है नहीं आपको। Okay, students, we can now
complete the lecture. Okay, you can leave.